Welcome back, friends. In this video we will learn about the article section, article tag. Okay, articles tag. Okay, so continue. I am taking a notepad file, text document. Okay, I am going to open the notepad plus plus. Okay, so writing some basic tags, that is HTML, close HTML. Okay, body, close body, head, close head, title, close title, and then title, the name of my title, that is article tag. Okay, and I am saving this file, pressing the Ctrl S and giving the file name, that is article.html. Okay, saved. Okay, so everyone please concentrate on the page number 92, I3 360 class 7. Okay, so better content layout with HTML5. Okay, the content of the web page can be organized logically in better and convenient in HTML5 with the use of following text, that is article, header, footer and section. Okay, article, header, footer and section. Okay, so for article, any self-contained independent component of the web page content can be treated as an article. For example, a news item, a blog post, a story, shorter story, or etc. Okay, and header and footer section, as their names, according to its names, header and footer are basically used to present the information at the top of the beginning and bottom of the end of any page text, like any article or a story. Okay, section represents the small unit of content like a title, subtitle, paragraph, image और etc. ओके, सिंपली देखिए, आर्टिकल आप लोगों को थ्योरी से पता चल गया क्यों यूज होता है. ओके, हेडर एंड फुटर देखिए, सपोज आई एम गोइंग टू ओपन, that is Facebook. Okay, I have opened the Facebook. Okay, then you can see here, this in this section, bottom section, English language, sign up, login, messenger, Facebook Lite. This is the footer section. Okay, this is the footer section. Within the footer section, it contains sign up, login, message. This is message, Facebook Lite, etc. So here use the section tag within the footer section. Okay, sorry, within the footer section, here added the anchor tag to sign up for login, messenger, Facebook Lite, watch, it places, etc. Okay, and then here in this web page, in this Facebook home page, here it is not showing the header section, so I am going to take another page. Okay, just like YouTube. Okay, in the YouTube you can see the header section. If I will scroll down the page, if I will scroll down the page, you can see the header section is not scrolling. Okay, header section is, that means header section आप देख रहे हो, header section में जो define है, जो written है, जैसे सपोज कीजिए अपलोड वीडियो. ओके, कुछ मेन्यूज है. ओके, नोटिफिकेशन, तो दैट मीन्स ये सब हेडर सेक्शन में आपका रिटर्न है. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, यूज कैसे करना है वो देखिए. सिंपली ओपन द आर्टिकल टैग, आर्टिकल, close article. Okay, and after the body tag I am adding some text, that is
h1 using the article tag. Okay, using the article tag. Okay, so next, in the article section I am using the header tag. Okay, within the header tag I am writing the header section, header, I am writing the header text, that is open Google. Okay, open Google, or only simple text I am writing. This is the header section. Okay, this is the header section. Close h1. Okay, completed header section, and then I am using section, section section 1. Section 2, close section. Section 3, okay, and closing the, opening the footer tag and closing the footer tag. Okay, within the footer tag I am writing, that is marquee, marquee h1, h2, and ribbon text. Okay, closing h2, and then close marquee. Here marquee tag I have used. Okay, marquee tag आपका राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट आपका जो टेक्स्ट है या फिर जो कंटेंट है उसको स्क्रॉल करेगा. ओके, सो डन. I have saved this content. In this section, in this page, you can see I have not used the break tag. I have not used the break tag. Just in this section, this is the section 1. Okay, here written the, this is the section 1, this is the section 2, this is the section 3. Okay, if I will run, it will take new line, every new line without break keyword. Okay, so running this page. Okay, it has been taken the new line, it has been already taken the new line without break tag, without break tag. That means सेक्शन टैग जहां आप यूज करेंगे वो एंटायर एक लाइन अपने लिए फिक्स कर लेता है. ठीक है, एक लाइन अपने लिए फिक्स कर लेता है. उसके लिए ब्रेक कीवर्ड, उसके नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए ब्रेक कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ब्रेक, सपोज कीजिए यहाँ पर सेक्शन क्लोज हुआ. ओके, सेक्शन क्लोज हुआ, यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट दे देंगे. दैट मीन्स ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा आपका टेक्स्ट. देखिए आया. ओके, सेक्शन दैट मीन्स वो सेपरेट है फुल्ली, उसमें कुछ चेंजिंग आप कीजिएगा कुछ चेंजिंग कीजिए तो आपका लाइन में तो चेंजिंग होगा, बट वो एक सेक्शन में बट जाता है. ओके, एक सेक्शन में बट जाता है और उसके आसपास आप कोई भी टेक्स्ट लिखें, आउटर सेक्शन टैग के आसपास आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो दैट मीन्स वो अलग लाइन कंसीडर करेगा. ओके, अलग लाइन कंसीडर करेगा. ओके, and then footer section I have written the ribbon text. Okay, I have written the footer text. Okay, ribbon text has been run. Okay, as you can see. Thank you.